this video we will be seeing about the remainder theorem. In last lecture we saw about the zeros of the polynomials. So zeros of the polynomial हम कैसे निकालते हैं? वो polynomials होते हैं जिससे कि हमारी given equation क्या आएगी? Zero आएगी. So let's have a look on the definition of the remainder theorem first. Let p of x be a polynomial of degree greater than 1 and a where a is a real number. If p of x is divided by x minus a, then remainder is p of a. कुछ समझ में नहीं आया नहीं? Now we will see कि कैसे समझना है definition को. P of x be a polynomial of degree greater than 1 and a where a is a real number. डिग्री कैसी होनी चाहिए? Greater than 1 or it can be a where a is any form of a real number. If p of x is divided by, अभी हमने p of x देखा था. p of x का मतलब अभी हमको मालूम है. अगर p of x सपोज हमारा x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 है, सपोज दिस इज एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, ये ऐसा कुछ एग्जाम्पल है p of x का. ये p of x को अगर यदि मुझे गिवन वैल्यू ऑफ x, कुछ तो एक गिवन वैल्यू रहेगी कि ये वाली इक्वेशन को हमको किसी और इक्वेशन से डिवाइड करना है. सपोज मेरे को डिवाइड करना है x प्लस 5 से. सपोज मेरे को डिवाइड करना है x प्लस 5 से. सो माई p ऑफ x इज डिवाइडेड बाय x माइनस a. तो मेरा x माइनस a, देन रिमाइंडर इज p ऑफ a इज इक्वल p ऑफ a. तो इसका मतलब क्या होता है? ये मेरा क्या है? ये x माइनस a. इसको मैं इक्वेट करूंगी जीरो के अलावा. इसको इक्वेट करूंगी तो यहाँ से जो मुझे x की वैल्यू मिलेगी वो x की वैल्यू जो मैं इधर रखूंगी और उससे मुझे जो आंसर मिलेगा, देखो मैं रखती हूँ p माइनस 5. सो इफ आई विल गेट माइनस 5 स्क्वायर प्लस 6 इंटू माइनस 5 प्लस 5. सो हियर इट विल गेट 25 माइनस 30 प्लस 5. सो 25 प्लस 30 विल गिव यू 25 प्लस 5 विल गिव यू 30. 30 माइनस 30 विल गिव यू 0. सो p ऑफ माइनस 5 इज नथिंग बट 0. ये हमको बताता है जो भी वैल्यू इधर आई है वो हमारा रिमाइंडर है. कहने का मतलब ये इक्वेशन को अगर यदि मैंने ये वाली इक्वेशन से डिवाइड कर दिया होता तो मेरा रिमाइंडर आता 0. मेरा रिमाइंडर आता 0. हाउ कम? हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से चेक करेंगे कि कैसे आता है. यही सेम इक्वेशन लेकर के तो मेरा रिमाइंडर कितना आया? 0. यहाँ पर इफ सपोज 0 की जगह पर मेरा कुछ और कांस्टेंट आया होता, 1 आया होता, 4 आया होता, 5 आया होता, जो भी आया होता. If suppose I would have taken x plus 4 ले लिया होता और कुछ इक्वेशन इसमें रखी होती, उससे डिवाइड करा होता तो कुछ नंबर आता. वो जो नंबर आता, that number is nothing but the remainder of that particular equation when we divide this equation. तो इसका मतलब ये है. I hope through example the definition must be clear. Where a is nothing but this. Where a is a real number, it's a real number. Minus भी real number ही होता है. If p of x is divided by this p of x, this is the p of x is divided by x plus a or x minus a, then the remainder is this. I hope the definition of the remainder theorem is clear. तो यहाँ पे से हम डायरेक्टली अगर यदि हमको एक इक्वेशन दी और बोला है कि इसे डिवाइड करनी है, डायरेक्ट रिमाइंडर निकाल सकते हैं बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम. बट कुछ क्वेश्चंस में ऐसा भी पूछा जाता है कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से क्या करते हैं. तो वी नीड टू चेक कि ये सच्ची में रिमाइंडर 0 आ भी रहा है या नहीं आ रहा है. तो दैट इज व्हाट दिस इज अ थ्योरम मेड फॉर. नाउ लेट्स सी, ये हमारे वही दो इक्वेशंस है जिससे हमने अभी x माइनस ए रख करके जो हमने इस पे सब्स्टिट्यूट करा था और हमको आंसर मिला था 0, रिमाइंडर मिला था 0. लेट्स सी कि डिवीजन लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे फाइंड आउट करता है. सो व्हाट वी नीड टू डू इज, ये जो हमारी इक्वेशन दी गई है हमको इसको x प्लस 5 से डिवाइड करना है. हमको इसको x प्लस 5 से डिवाइड करना है. अगर हमको इसको x प्लस 5 से डिवाइड करना है तो व्हाट वी विल डू, x इंटू एक्स विल गिव यू x स्क्वायर प्लस 5x. यहाँ पे माइनस के साइन लगेंगे एंड x स्क्वायर विल गेट कैंसिल आउट. 6x माइनस 5x विल गिव यू x प्लस 5. नाउ अगेन x इंटू एक्स, सो हियर वी विल बी हैविंग 1 इंटू x विल गिव यू x एंड प्लस 5. माइनस माइनस. आई होप दैट लॉन्ग डिवीजन मेथड मस्ट बी क्लियर बिकॉज ये सब हम लोग 8th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. सो नाउ यू कैन सी द रिमाइंडर इज 0. तो जो मैं आपको लास्ट समय बात कर रही थी बाय रिमाइंडर थ्योरम, तो रिमाइंडर थ्योरम से भी वही आंसर आता है और एक्चुअली में हम डिवाइड करके देखें तो भी हमें वही आंसर मिलता है. So let's have a look on another question. See the next question. Find the remainder when p of x is x cube plus 3x square plus 3x plus 1 is divided by x plus 2. Let's see how we can divide by long division method. X cube plus 3x square plus 3x plus 1. So here we have x plus 2. So here x square into x will give you x cube. X square into 2 will give you 2x square. Subtract it, minus minus.
3x square minus 2x square will give you x square plus 3x plus 1. We are carrying over it, these terms. Now, एक x इधर है, एक x चाहिए. So x into x will give you x square. X into 2 will give you 2x minus 3x minus 2x will give you x plus 1. Now plus 1. 1 into x is x. 1 into 2 is 2. So if you subtract, 1 minus 2 will give you minus 1. So the remainder for the given equation is, when we divide p of x by x plus 2, we will get minus 1. So remainder comes out to be minus 1. अगर यही क्वेश्चन हमने क्या करा होता, सेम क्वेश्चन if you would have attempted with the remainder theorem, let's see कि उससे क्या रिमाइंडर आता. So here x plus a, तो सबसे पहले रिमाइंडर थ्योरम का मैंने जो बोला था क्या, x plus 2 जो दिया गया है जिससे डिवाइड करना है, सबसे पहले उसको किससे इक्वेट करेंगे, 0 से, और उधर से सबसे पहले x की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू तो नहीं है, हमको इसमें जो x की वैल्यू रखनी है वो हमारी निकलती है इधर से. So x will be equal to minus 2. If x is equal to minus 2, keep this minus 2 in p of x and let's see. p of minus 2 is equals to minus 2 का whole cube plus 3 into minus 2 का square plus 2 into minus 2 plus 1. Now, if you open minus 2 whole cube will give you minus 8 plus this will be 4. 4 into 3 will give you 12 minus 4 plus 1. Now, if you add minus 8 plus 12 will give you plus 4 minus 6 plus 1. Now you can see 4 minus 2 is nothing but minus 2 plus 1 and it comes out to be minus 1. So by remainder theorem we get the remainder as minus 1. So this is a shortcut method, that's it, but by using remainder theorem also we can avoid this long division method and can find out the remainder. This is the benefit of using the remainder theorem. So this is the way how we divided by long division method, and this is the way how we use the remainder theorem to find out the remainder for the given polynomial. Now here we have another question. Find the remainder when this is nothing but Rp of x. This is nothing but Rp of x. X raised to 4 plus 3x square minus 2x square plus x plus 1 is divided by x minus 1 by remainder theorem. So by remainder theorem we need to find the remainder for the given polynomial. So first of all किससे डिवाइड करना है, x minus 1 से. अगर x minus 1 से डिवाइड करना है तो x minus 1 को equal to 0 रखेंगे. And here from here we will get the value for x. Now we will substitute the value of 1 in the given polynomial and let's see, we will get p of 1 is equals to 1 raised to 4 plus 1 cube minus 2 into 1 square plus 1 plus 1. Here 1 plus 1 minus 2 plus 1 plus 1. 1 plus 1 will give you 2, 2 minus 2 plus 2, this 2 and 2 will get cancelled out, and the remainder when we divide this polynomial by x minus 1, even if you can try it by long division method, you will get the remainder as 2. So this is the method how we can find the remainder by using remainder theorem. The remainder when it is the given polynomial is being divided by some other polynomial. Even this is also the polynomial. We can tell this polynomial as, हम इसको भी नाम दे सकते हैं, जैसे g of x दे दिया is equals to x minus 1. हाँ, बट नाम अलग देना है. यहाँ पे p of x दिया है तो यहाँ पे g of x देंगे, q of x देंगे, t of x, कुछ भी आपकी मर्जी से. But the name should be different. ठीक है? So one polynomial divided by another polynomial will be solved by using the remainder theorem. Now in this question we need to check if the given polynomial, this is the given polynomial q of t is equals to 4t cube plus 4t square minus t minus 1. यहाँ पर जो equation है वो t के terms में दिया है, इसलिए यहाँ पर t लिखा है. Is a multiple of 2t plus 1. ये पूछा है कि ये इसका मल्टीपल है या नहीं. मल्टीपल का मतलब होता है अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूं तो हमको रिमाइंडर मिलेगा 0. तो रिमाइंडर थ्योरम यूज करके हम ये ढूंढ सकते हैं कि अगर यदि हमारा ये this is nothing but g of t. This polynomial is nothing but g of t. If we divide this q of t with g of t, if we get 0, the remainder is 0, then we can say the 2t plus 1 is the multiple for the given polynomial. Let's see. तो g of t सबसे पहले अगर यदि t निकालना है तो 2t plus 1 को क्या रखना पड़ेगा, 0. तो 2t is equals to minus 1. The t comes out to be minus 1 upon 2. T comes out to be minus 1 upon 2. Keep this t in the given polynomial and then we will see what we will get. So it will be q minus 1 upon 2 is equals to 4 into minus 1 upon 2
का होल क्यूब प्लस 4 इंटू माइनस 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 minus 1. Now we will solve this equation and we will get 4 into minus 1/2 cube will give out to be minus 1/8 plus 4 into 1/4. Minus minus will become plus 1/2 minus 1. Now this 4 and 4 will get cancelled out. This will get cancelled out and the remaining thing will be minus half plus 1 plus half minus 1. Minus half and plus half will get cancelled out. Plus 1 and minus 1 will get cancelled out and the remaining thing for q of minus 1/2 is 0. So we can say the remainder is 0 and we can comment 2t plus 1 is a multiple of q of t, is a multiple of q of t. I hope such type of equations, such type of problems must be clear. Now let us see another type of a question. If x is equals to 2, find a for f of x 2x cube minus 3x plus 7a. अभी यहाँ पे क्या बोला गया है? यहाँ पे बोला गया है कि हमारी x की वैल्यू कितनी है? 2 है. It is 2. So if the value for x is 2, we can directly put in an f of x and can find the value of a. It's a very simple sum. F of 2 is equals to, if f of x is equals to 2, we can equate this equation equal to 0. So 2 into 2 cube minus 3 into 2 plus 7a equal to 0. इसका ये मतलब है. Now we will solve it. 2 into 8 minus 3 into 2 will give you 6 plus 7a equal to 0. 16 minus 6 plus 7a equal to 0. Here you will get 16 minus 6 will give you 10 plus 7a equal to 0. Keep the variable on this side and take the constant on another side. We will get minus 10. The value for a comes out to be minus 10 upon 7. So this is the value of minus 10 upon 7. I hope this sum must be clear. Now we will see the sums, different sort of question. If x is equals to 2 and x is equals to 0, add the zeros of the polynomial f of x. Polynomial क्या दिया? 2x cube minus 5x square plus ax plus b. Then find the value of a and b. यहाँ पे हमको ये दोनों zero of the polynomial दिए हैं, मतलब इसका रिमाइंडर कितना आने वाला है? 0. So we can take once x equal to 2 रख करके ये equation में रखेंगे तो we will get one equation. Let's see, f of is equals to 2 रखा तो 2 into 2 cube minus 5 into 2 square plus a into 2 plus b. Here you will get 2 into 2 cube is 8 minus 2 square is 4, 5 into 4 plus 2a plus b. So you will get 16 minus 20 plus 2a plus b equal to 0. This comes out to be minus 4 plus 2a plus b equal to 0. We can take the constant on this side and we can frame the equation as 2a plus b is equals to 4. This is nothing but this is our equation number 1. तो ये कब मिला हमको? जब हमने x की वैल्यू को 2 रखा. अभी हमको 2x की वैल्यू दे रखी है. अभी हम x की वैल्यू को 2 रख के मुझे ये इक्वेशन मिली. फॉर f of 2 के लिए मेरे को ये इक्वेशन मिली. Similarly, I can put the value of x to be 0 and we can have one more equation. Let's find f of 0. So 2 into 0 cube minus 5 into 0 square plus a into 0 plus b equal to 0. तो यहाँ से हमको डायरेक्टली मिल रहा है. देखो ये 0 के इक्वल है तो 0 minus 0 plus b equal to 0. Can we say the value for b is nothing but 0? The value for b is nothing but 0. b की वैल्यू अगर 0 आ गई तो क्या हम ये b की वैल्यू इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके a की वैल्यू निकाल सकते हैं? How we can substitute 2a plus instead of b we will write 0 and 4. So यहाँ पे क्या बचा? केवल a का टर्म बचा, that is 4/2 and the value for a comes out to be 2. So this is how we can find the unknowns if it is given in the question the value for x is already the 0 of the polynomial or it is a remainder. So we can have look on how we can find a and b or any sorts of question which have. Let us have a look for the last question of this video. If p of x is equals to ax cube plus 3x square minus 3 and f of x is equals to 2x cube minus 5x plus a. These are the two polynomials given to you this time. r divided by x minus 4, then find a if in the following cases. क्या केसेस दिए हैं? पहला वाला केस देखेंगे. The first case is when r1 plus r2 means remainder 1 when we divide first equation
equation by x minus 4 and remainder 2 we will get by dividing f of x by x minus 4. So let's us see कि पहले तो r1 r2 निकालना है. हमको क्या निकालना है पहले? r1 r2 निकालना है. तो let's say p of x is ax cube plus 3x square minus 3. It is being divided by x minus 4. x minus 4 से divide करना है मतलब x minus 4 को equal to 0 रखेंगे and the value for x comes out to be 4. And this value we will put in the given equation, given polynomial. So the given polynomial, if I put 4, it comes out to be a into 4 cube plus 3 into 4 square minus 3. Minus 3. Now if I solve it, 4 cube gives me 64a plus 16 into 3 minus 3. ठीक है? 64a plus 16 into 3 will give me 48 minus 3. Now, if I solve 64a plus 48 minus 3 will give me 45. This is nothing but R1. This is the remainder R1 when I solve for P for 4. Now, what I need to solve it for R of 2. R of 2 के लिए solve करना है मतलब कि मुझे f of x again I need to divide by x minus 4. x minus 4 मतलब x की value कितनी? 4. So I need to keep for f of 4 in this equation. So 2 into 4 cube minus 5 into 4 plus a. 5 into 4 plus a. Let's solve the equation. 4 cube is again 64. 64 into 2 minus 20 plus a. 64 into 2 will give you 128 minus 20 plus a. And 128 minus 20 will give you 108 plus a. So this is my R2. So this is my R2. So I hope how to take R1 and R2 must be clear. अभी हम देखते हैं कि हमारी situations हमको क्या दी हुई हैं. The first case which was given us to was R1 plus R2 will be 0. R1 plus R2 मतलब R1 is 64a plus 45 plus R2 is 108a. 108 plus a equal to 0. Now we can have 64 plus a will give you 65a plus 45 plus 108. 45 plus 108 will give you 153 is equals to 0. So we will take constant on one side minus 153. A comes out to be minus 153 upon 65. So this is the answer of A for first case. This is the answer of A for first case. Similarly, we can take out when R1 is equals to R2. जैसे हमने R1 R2 को प्लस करके 0 इक्वेट किया according to the situation, अब हम क्या करेंगे, ये R1 को इस R2 के इक्वल रख देंगे and we will see कि हमारा आंसर क्या फ्लक्चुएट होता है. So ये R1 हमारा कितना 64a plus 45 which will be equal to 108 plus a. Take the variables on the one side and constant on the other side. 64a minus a, 108 minus 45. 64a minus a will give you 63a is equals to 108 minus 5 will give you 63. A will be 63 upon 63. This is nothing but 1. The value of a comes out to be 1 when the remainders are equal. I hope such type of situations, such type of problems must be clear. So we will stop today's lecture over here. Thank you very much and have a nice day. And if you like the content, please like, share and subscribe with your friends. And please subscribe it so that you can have a notification for the next video. Thank you.